I hope screen is visible. So we are now discussing Pygmalion. So Pygmalion is by George Bernard Shaw. This is a play, and this is based on the historical legend Pygmalion. Bernard Shaw was a man who was interested in literature, but at the same time, he was interested in linguistics. So he wanted to bring reformation to the language, and he wanted to simplify the English language. Rather, he dedicated all his property to the simplification of English spellings. So this is also an effort in the same, in the same continuation, Pygmalion, which is about phonetics and phonology. So Pygmalion is written by George Bernard Shaw. It has 5 acts. Henry Higgins was specialized in phonetics. So Henry Higgins is a professor of phonetics, जो कि बड़ा expert है और वो बंदों की बोली से समझ आता कि ये किस जगह से belong करते हैं. Eliza Doolittle is a girl, the only beautiful girl in the play, and she is initially an uneducated flower girl. सीन बेसिकली ये होता है कि एक बस स्टॉप पे खड़े होते हैं जहाँ पे हिगिंस भी है, कुछ और लोग भी हैं जो कि प्ले में अपेयर भी होते हैं, कुछ ऐसे बाय स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बाद में नहीं आते. तो वहां पे हिगिंस देखता है कि फ्रेडी एक लड़का जो कि प्ले में अपेयर होगा आफ्टरवर्ड्स, वो अपनी माँ और बहन के लिए टैक्सी ढूंढने जाता है क्योंकि बारिश हो रही होती है. तो सारे लोग शेल्टर में खड़े होते हैं, बसेस कम होती हैं, टैक्सीज कम होती हैं, सारी बुक होती हैं. So he bumps into a flower girl जिसके फूल गिर जाते हैं. तो जब वो बोलती है तो हिगिंस बड़ा इंस्पायर होता है और वो उसके जो एक डायलेक्ट बोल रही है, आई गेस इट वाज कॉकनी डायलेक्ट, तो वो उसको बड़ा मुतासिर होता है, उससे नोट करता है अपने पास. तो वो डर जाती है कि शायद ये कोई स्पाई है, जो पुलिस वाला है, जो उसकी बातों को नोट कर रहा है. एंड आफ्टरवर्ड्स ही टेल्स कि ही इज नॉट सो, ही इज जस्ट अ प्रोफेसर. और वहां पे एक और बंदा भी आता है जो कि कोइंसिडेंटली उससे ही मिलने उसकी तरफ जा रहा होता है, हु इज कर्नल पिकरिंग. तो ये दोनों वहां पे मुलाकात करते हैं. सो कर्नल पिकरिंग इज ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत, जो कि इंडिया में था और इंडिया से यहाँ पे इसको मिलने आया. सो बोथ आर वर्किंग विद लैंग्वेजेस. हिगिंस वाज प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स एंड कर्नल पिकरिंग वाज ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत, सो आल्सो इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक्स. Colonel Pickering was courteous and polite to Eliza. Like Higgins polite नहीं होता, लेकिन Colonel Pickering polite होता है. Alfred Doolittle was a dust man and also father of Eliza Doolittle. शराबी होता है, गरीब होता है. Clara Ainsford was a modern snobbish girl. क्लारा एक मॉडर्न सी स्नॉबिश गर्ल है जो इसमें दिखाई गई. ये फ्रेडी की सिस्टर है. फ्रेडी एंसफोर्ड हिल वाज अ प्लेजेंट यंग बॉय अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एलिजा. अभी नहीं, जब उसकी टक्कर हुई है शुरू में, अभी नहीं, लेकिन बाद में आफ्टरवर्ड्स. सो ये क्लारा, उसकी मदर और जो फ्रेडी हैं, दे वर वेटिंग फॉर द टैक्सी और बस इन द बिगिनिंग. Who was enchanted by Eliza upon first social meeting. So it is Freddie. Basically हुआ क्या कि जब वो दोनों आपस में अपना इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहां पे हिगिंस सेज कि ये जो फ्लावर गर्ल है, इसको मैं इतना मेरे में टैलेंट है फोनेटिक्स के वाले से कि मैं इसके रस्टिक डायलेक्ट को चेंज करके इसे डचेस बना सकता हूँ, या मैं इसको एक फ्लावर गर्ल की फ्लावर सेलिंग गर्ल से एक फ्लावर शॉप में बिठा सकता हूँ. सो शी इज वेरी लाइक शी इज इंटरेस्टेड इन दैट. और नेक्स्ट डे वो आती है इसके पास कि मुझे सिखाओ, और उसी सीखने के प्रोसेस में वो अपनी माँ के घर लेके जाता है इसको, मिसेस हिगिंस के घर, जहाँ पे फ्रेडी फैमिली आई होती है और वो बड़े इंटरेस्ट लेता है एलिजा में. मिसेस पियर्स वॉज हिगिंस हाउसकीपर, जो कि ख्याल रखती है एलिजा का. What is the significance of the title Pygmalion? Who was Pygmalion? So it was ancient Greek sculptor who made beautiful statue of a woman and later fell in love with the statue. और फिर उस स्टैचू में गॉडेस ने जान डाल दी.
Why Alexander Melville Bell, Tito, and Henry Sweet were heroes to Shaw? Because they wanted to reform languages. So ये languages को reform करना चाहते थे, and Shaw considered them hero कि ये उसके लिए बड़े prominent characters थे. Alexander Melville Bell was the father of Alexander Graham Bell, जिसके बारे में आपने सुना है, टेलीफोन का मुअज्जिद जिसने टेलीफोन बनाया. What does Freddie do at the beginning of Act 1 that shows his poor manners? Like he knocks over the flower girl and does not offer to pay for the flowers he ruined, क्योंकि काफी flowers जमीन पे भी गिरते हैं. Flower girl was 18 to 20 years old. Why did Eliza want to learn the sophisticated way of speaking? Because she wanted to work at indoor flower shop. तो उसके लिए उसे अच्छी language का होना जरूरी था. What is Freddie looking for in the beginning of Act 1? So he's looking for a taxi, a cab. Where does Eliza tell the taxi driver to take her? She tells him to take her to Buckingham Palace. What does Professor Higgins bet he will transform the flower girl into? So he says that he can make her speak better than a duchess. How was the weather during the opening of the first act? So it was a rainy night. Professor Higgins is an attractive and rude phonetician around 40. Why does Eliza's father come to see Higgins? So he comes to blackmail Higgins for his daughter's honor, कि वो कहता है कि तुमने इसे किडनैप कर लिया है, तो वो उससे पैसे चार्ज करता है. Who was the note taker? जो शुरू में नोट ले रहा होता है, so that was not a person from police, that was basically Higgins himself. Where is Act 1 of the play set? So that is set at a bus stop, जहाँ पे सब लोग खड़े हैं. What is the first thing Higgins noticed about Eliza? So that was her Cockney accent. Eliza was a shy and timid girl. Which character of the play created the comedy? So it is Freddie. His talks, his behavior, his manners, they bring comedy in play. What does the flower girl do at the end of Act 1 that shows that she has a sense of pride? Because she gives some extra coins to cab driver. What does Eliza likely mean when she says, I'm a good girl, I am? So she means to say that she's not a thief. Higgins called Eliza a presumptuous insect. So presumptuous insect उसे कहता है क्योंकि वो basically उसमें कोई खास interest नहीं ले रहा. So presumptuous insect in a way. Mrs. Higgins worries that the experiment will lead to problems once it ends. क्यों problems? क्योंकि once Eliza is made like a duchess, sophisticated हो जाती है, बोलना अच्छा हो जाता है, गुफ्तगू आ जाती है. What will she be doing then? क्योंकि flower girl तो वो बन नहीं सकती. She doesn't have enough money. Duchess वो है नहीं, और अब वो ये flower selling भी नहीं कर सकती, तो वो ना घर की रही ना घाट की. तो this is a bad experiment on her. Who was Nepomuk? So Nepomuk was a former pupil of Higgin. So Higgin was master of the dialects of London, and his pupil Nepomuk, he was master of many more dialects and languages. What does Nepomuk and the ambassador's wife conclude about Eliza? So when the term completes and when the bet is about to be end, so now they go to ambassador's party. तो वहाँ पे Eliza को भी ले जाते हैं, और to see कि there is no irrelevant person, Nepomuk is hired and he is talking to everyone to assess कि ये लोग वाकई रॉयल हैं या वैसे ही आ गए. So ये एक एसिड टेस्ट होता है Eliza के डायलेक्ट और उसकी गुफ्तगू का. So when Nepomuk sees her, so उसको ये जब उससे बात करता है Eliza से, he concludes कि ये कोई इंग्लिश तो नहीं लग रही, लेकिन at least she must be some Hungarian princess, यानी हंगरी की princess जरूर है. So he is unable to conclude
कि ये लाइक, और इसमें भी सामने आता है कि उस्ताद उस्ताद ही रहता है, कि नेपोमुक थोड़ा सा बड़ी शेखियां बगा रहा था अपने उस्ताद के सामने कि तुम थोड़ा जानते हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट होकर ज्यादा जानता हूँ। लेकिन उस्ताद ने प्रूव कर दिया कि वो जो स्टूडेंट था वो उसके उस एक्सपेरिमेंट को जज नहीं कर पाया। How many languages Nepomuk could speak? So he could speak 32 languages. How was the behavior of Higgins towards Eliza? So he was always rude and strict. Eliza called Higgins a great bully. Higgins rushed to his mother in a panic because Eliza has run away. Because Eliza was interested in Higgins, but Higgins was not taking any interest in her. Like ये उसकी एक women hating nature, like misogynistic attitude था, whatever. So he was kind of pretending, or really he was not interested in Eliza. So Eliza के साथ वो उसकी बड़ी disrespect करता है, and Eliza runs from his house. Eliza's father becomes unhappily rich from that trust of a deceased millionaire. तो उसको ट्रस्ट में बड़ी दौलत मिल जाती है, वो उसके बाद शादी भी कर लेता है दोबारा। मिसेस हिगिंस वॉज हाइडिंग एलिजा अपस्टेयर्स, तो वहां से भाग के एलिजा मिसेस हिगिंस के पास आ जाती है। मिसेस हिगिंस चार्ट्स द टू ऑफ देम फॉर प्लेइंग विद द गर्ल्स अफेक्शन, सो कर्नल पिकरिंग और हिगिंस अपने बेटे दोनों को। Eliza thanks Pickering for always treating her like a lady. Okay, he was always respectful, and he was always concerned about her. Dash threatens Higgins that she will go work with his rival phonetician Nepomuk. So this is a warning by Eliza. Higgins expects Eliza to return. Eliza bumps into Freddie and they have a very good moment together. Nearly the end, Eliza's father is again marrying. Pygmalion is legendary figure of Cyprus in Greek mythology. Pygmalion was a king and a sculptor. Pygmalion was more familiar from Ovid's narrative poem Metamorphosis, जहाँ पे उसको ज़्यादा उसके बारे में बात हुई. So these were some MCQs from Pygmalion by George Bernard Shaw, a person who was interested in language but also interested in literature as well.